Um, this on of my color. Islam. He's from Chennai. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह एक सफ़र के सिलसिले में या एक मेरा टूर था यहाँ का। आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पता चला कि लोग उर्दू जानते हैं, तो मुझे नहीं पता था यहाँ लोग उर्दू बोलते हैं। तो मैं कोई प्रोग्राम के प्लान से तो मतलब ये रीजन में ही नहीं आया था, किसी से मुलाकात थी एक और मैं जाने वाला था, लेकिन फिर पता चला लोग उर्दू जानते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से लेकर जी। अच्छा पूरा नहीं बोल पाऊँगा इंग्लिश में इंशाअल्लाह जिस मैं एंड में जो है सम पार्ट ऑफ द स्पीच आई विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश because I am a Urdu speaker, so it's very difficult for me to speak continuously in English, but inshallah I will try to speak some part at the end in the English. तो मुझे पता चला कि लोग यहाँ उर्दू जानते हैं, तो कल से आज तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक 6-7 स्पीचेस हुई, अलग अलग जगह प्रोग्राम्स हुए, और एक ही ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था जो आज शाम में बाद मगरिब यहाँ है। तो मुझसे कहा गया कि टीचर्स हैं और टीचर्स को कुछ बात मैं कहूँ, कुछ नसीहत जिसको हम कहेंगे या कोई गाइडेंस जिसको हम कहेंगे। तो मेरी तरफ से मैं अभी चूँकि वक्त नहीं है कि एक पॉइंट जिसको कहेंगे वो रखने की कोशिश करूँगा। एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने स्टूडेंट को पहचाने, कि एक टीचर के लिए कंपलसरी है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनका वो नॉलेज गेन करे, हु दे आर। ठीक है, इसलिए कि जब तक वो अपने स्टूडेंट्स का नॉलेज नहीं गेन करेंगे कि आपके स्टूडेंट्स कौन हैं, आप उनको नॉलेज नहीं दे सकते, इल्म नहीं दे सकते अदर की। तो ये बेहद ज़रूरी है। जनरली हमारे स्कूलिंग सिस्टम में टीचर्स और स्टूडेंट्स का ऐसा कोई पार्ट नहीं होता जहाँ वो मिले और एक दूसरे को जाने। स्टूडेंट आया, फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया, आप खड़े हुए, डे 1 पे आप क्लास में इंटर हुए, चलो ये सब्जेक्ट है और आपने शुरू कर दिया। लेकिन अभी स्टूडेंट और टीचर में, उस्ताद और शागिद के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये मेरा जो माई फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट देयर शुड बी रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, बिकॉज वी आर इन द लर्निंग प्रोसेस, एंड इन द लर्निंग प्रोसेस रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड अ टीचर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ टीचर आई विल रिकमेंड यू टू बिकम अ मेंटर, because a teacher is someone who will just come into class and teach, he will explain and he will go. But a mentor is a person who will come into the class, he will teach them, then take the student to real scenario, and then he will like explain them what he has taught in the class practically. So this is important. तो ये पहला पॉइंट था कि टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट को जाने, दे शुड नो द स्टूडेंट। जब तक आपने स्टूडेंट को नहीं जानेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप उनको कुछ भी दे पाए। It's very difficult for a person to teach someone to whom I think so he don't know, और उसको वो समझ ना पाए कि वो बच्चा कौन है, कैसा है, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई बातचीत नहीं आपस में, और आप उसको पढ़ाना चाहते हैं, प्लस आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करें, पहले सबसे पहले ताल्लुकात बनाएं। कैसे ताल्लुकात? फॉर एग्जांपल अ टीचर एंटर्स इनटू द क्लास and it is day 1 and he will ask the name of all the students. You will ask the name of student, okay, and then you will try to remember that name and always call that student with that name only. Like for example, there is someone who is called as Abdullah, someone who is called as Ram, and when you are entering the class and you are asking them the name, next time whenever you will address to that particular student, you should take the name. You should say, Abdullah, how are you? Beta, how was your day? How was yesterday? What's your plan for today? What you will be going to do tomorrow? It will take, I think so, hardly 15 seconds to do this. But it's very important, because when there will be a relationship between teacher and student, then only I think so there will be, the learning process will start. Else it will be a process of like dictating, bureaucratic way of like what I can say, implementing, or किसी चीज़ को थोप देना बोलते हैं ना, समथिंग यू आर पुशिंग इनटू देम। बट व्हेन यू हैव अ रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट एंड यू विल बी एक्सप्लेनिंग देम लाइक Abdullah, Ram, this is what we have learned. Can you just stand and explain what I have said? Can you just say what you have done yesterday? Can you just say what we have learned today? Inshallah, we will planning to do something in the next lecture or next session. We will be doing this. This relationship is most important relationship.
And in general, I'm seeing in schools in India, we don't have something like a relationship between the student and a teacher. So what I will say, if you want to be a good teacher, if you want to be a teacher who should be remembered in the life of that student, and after you are gone from this world, then you have to adopt this policy of building a relationship with student. You can dedicate, for example, 2, 3 or 4 lectures in which you will have a relationship with the students. Then that student will be here for, I think so, if he is into KG, then he will be here for 10 years or 12 years or 13 years maybe. Okay. Once you have built that relationship, it will go on for his life until unless he is here in this class. So this will be my first point, to build relationship. This is first thing. Second thing is, your mood should not be reflected in your teaching. Like for example, you have some issue at your home. There is some issue while traveling to school, like someone has like he was driving rashly and he hit you. In your home there is some problem with commonly in India there is problem between daughter-in-law and mother-in-law. That problem should not reflect when you are in the student. For example, you are there disheartened, but whenever you will enter the class, that time you will leave your mood there and you will be a teacher or mentor for the student. Because many a time it happens that the mood or what is happening outside of the class, it is the teacher is reflecting that in the class. उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है. लाइक उसकी सास ने कुछ बोली तो यहाँ के बदला लेती वो दूसरे बच्चों से. गाड़ी ने वहाँ टक्कर मारी, यहाँ के बच्चों को पनिश करते हैं. रीज़न वहाँ से उसका मूड ऑफ है तो यहाँ की वो बदला ले रही है. सो मूड रिफ्लेक्ट नहीं होना, टीचर का मूड रिफ्लेक्ट नहीं होना क्लास पे, बल्कि होना ये चाहिए कि टीचर क्लास में जब आए तो वो एक मेंटर है और उसको सारे इश्यूज़ को बाहर छोड़ना है, फिर यहाँ के उसको बच्चों को अच्छे से बैठना है, उसको एक्सप्लेन करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए. थर्ड पॉइंट विल बी लाइक व्हेन यू आर टीचिंग द चाइल्ड, एक्चुअली if you are thinking that the child is learning from you, this will be the biggest mistake a teacher can make, because you are in the process of learning, not teaching. You are learning from them and they are learning from you. It's a two-way process. But when you are thinking that I am a teacher and I will come into class, students learn this and learn this and finish, so you will never learn the student. So what you are doing, you are coming into class, you are learning from them and they are learning from you. It's a two-way thing. Examples देके बातों को समझाना. Chapter से पहले, before starting the chapter, you can just explain or just ask some questions about that chapter, what knowledge they have got, what you have to give them, what they should know, what they are not knowing. This is something like a complete process. तो ये एक जिसको कहेंगे एक ज़रूरी पॉइंट है, याद रखिए कि जब भी आप ये करें, आप उससे सीख रहे हैं, आप उसको सिखा नहीं रहे हैं. मैं स्पीचेस देता हूँ. आई एम अ पब्लिक स्पीकर, आई एम अ उर्दू पब्लिक स्पीकर. सो whenever I am giving speeches, some people are there, they are asking me how you are connecting yourself to the people when you are talking with them. And then I am telling them that this is what I have learned from them only. Actually I am learning from the audience, then I am reflecting that learning into next lecture. What I have learned from the previous lecture, that this is the problem, this is the solution, and now I have to say these points. So alhamdulillah, this is the process. So you are into learning process, not into teaching process. If you are not in the learning process, that means you have closed yourself. Now you are thinking that you are the one who will teach them. And it happens many a time in this modern age when Google is there and artificial intelligence is there. Many a times the child will have more knowledge into certain fields than the teacher. And you have to accept that. Like in the field of media, animations, cartoons, what's going in the news, they will be knowing better than a teacher. So ये जिसको कहेंगे एक प्रोसेस है. आप सीख रहे हैं, ये बात याद रखिए, आप सिखा नहीं रहे हैं. जब आप सिखाने के मूड से जाएंगे तो you will have attitude when you will go like I have to teach them. But when you will go to them by the thought process of learning, then your attitude will be different. मतलब एक अलग एटीट्यूड से आप जाएंगे. जब आप वहाँ जाएंगे ये सोच कर कि मुझे उनको सीखना है, उनसे साथ में सिखाना है, और जब आप जाएंगे ये सोच के नहीं मुझे तो सिर्फ सिखाना है इन लोगों को, तो आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे. याद रखिए. तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि टीचिंग के अंदर याद रखिए. तो टीचर्स का और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है ये एक्चुअली एक मोहब्बत वाला रिलेशनशिप है, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है. द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट इज ऑफ लव, रिस्पेक्ट
dignity, honor, learning. This is the relationship. So you have to build that relationship. So first point is important, that you have to connect with the child. Then you have to teach them. Then you can adopt beautiful or attractive or motivating teaching methods. It's very important. Like when you are teaching to a child, you should know his mentality, and then you should have attractive methods of teaching. Different kind of methods can be there, implemented according to the class, age group, and understanding level or IQ level, whatever you call. So it's very important कि उनके जहनियत के एतबार से आपको उनको वो चीज़ देना है जो वो समझ सकते हैं. तो पहले उनको समझना है, फिर उसके बाद जो है अपने मूड को रिफ्लेक्ट नहीं करना है, उनके साथ मिलके सीखना है. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है याद रखिए. तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम उस लेवल को अटेंड करेंगे जिसको हम लर्निंग बोलते हैं. अगर हमने वो नहीं किया तो फिर हम हो सकता है टीचर बन जाए अच्छे, बट मतलब जिसको कहेंगे वो लर्निंग प्रोसेस से हम नहीं गए, स्टूडेंट्स हमें कभी याद नहीं करेंगे. आप अपने स्कूल के हर वो टीचर को अभी भी याद करते होंगे जिसने आपको अच्छा पढ़ाया था, कभी आपके सर पे हाथ फेरा था, कभी आपको जो है थोड़ी के ऊपर हाथ रख के आपकी मुंडी नीचे से ऊपर उठाया था. आप उसको हमेशा याद करेंगे, लेकिन उस टीचर को कभी याद नहीं करेंगे जो क्लास में सोता था, जिसने आपको मारा, जिसने टाइम तो लिया आपका लेकिन आपको कुछ सिखा नहीं सका. तो ये तभी होता है कि जब आप ऐसा रिलेशनशिप बनाएं. तो बहरहाल मुझे 10 मिनट दिए गए थे कि मैं कुछ बातें कहूँ. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे लगा स्कूल विज़िट करना है. आई वॉज जस्ट हैविंग नॉलेज दैट आई हैव टू विजिट द स्कूल एंड आई हैव टू गो. तो मुझे नॉलेज नहीं था. अगर पहले कुछ होता तो शायद मैं आपके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स बना के लाता. बट एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ, इफ़ यू कैन, आई कैन गिव अ सजेशन दैट you can go through some of the lectures of international board teachers. They have activity based programs, teaching methods with collaboration, coordination and cooperation and communication, that type of skills. So you can go through that, and you can implement a kind of hybrid model into this CBSE school. You can take some part from there, some part from CBSE, and you can have a hybrid model in which you can teach, they can learn, and the process will be made easy based on activities or hands-on things like practical, doing something in the ground and all those things. So you can just have those kind of videos, inshallah. I am having a series of lectures on this topic. 9 or 10 lectures are there, approximately 1 hour to 1.5 hour. All of them are in Urdu, about school, in which school we should take admission, school ka selection kaise kare, how to select a school. Then I have how a teacher should be, then teacher-student relationship, teachers-parent relationship, management-teachers relationship, management-parent relationship. Everything I have explained into those lectures. You can go through that series, school series it's called. It's but in Urdu. तो वो आप देख सकते हैं इंशाल्लाह. काफ़ी तफसील में मैंने उसमें डिस्कशन किया है. उम्मीद करता हूँ ये 2-3 बातें हो सकता है आपके लिए मुफीद रही होंगी. और इसी पे अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.